Shivaya Bhagavati Uttama-shloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 10, verse number 24. Hastu Ruruhatu Tasya Nana Karma Vichirshaya Tayo Tu Balavan Indra Adanam Abhayasayam Hastururu Hatistasya Nana Karma Vichishaya Tastu Balavam Indra Adanam Ubhayasaya Hastururu Hatistasya Nana Karma Vichishaya Tastu Balavan Indra Adanam Ubhayasaya Hastururu Hatistasya Nana Karma Vichishaya Tastu Balavan Indra Adanam Ubhayasaya Translation. Or you read a translation backward. तत्पश्चात
मनुष्य को नाना प्रकार के कार्यों करने की इच्छा हुई तो दो हाथ उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर से कार्य भी प्रकट हुए। हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी की अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा गया है। इस तरह जीवात्माओं को इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशिष्ट देवता द्वारा होता है। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं रह सकता। जीवात्मा इंद्रिय द्वारा है, इंद्रिया द्वारा नियंत्रित है और वे काम परमेश्वर के नाम होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो भोग जीवात्मा अपने आप को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है वह भगवान की वैज्ञानिक शक्ति की चक्कर में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने में रहता है तब तक उसे भगवान की वैज्ञानिक शक्ति की कठोर नियंत्रण में रहना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न नहीं है, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों ना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So here, this is the second canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 10. तो ये जो है श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और 10वां अध्याय है, which is titled Bhagavatam is the answer to all questions. इसका जो प्रश्न है भागवतम जो है सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देता है। So this chapter has 51 verses. तो ये जो अध्याय है उसके 51 यानी 51 पेज है। So these verses are divided into 3 sections. तो ये जो पूरा है 3 विभागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। So the first section is from verse 1 up to 7. First verse up to 7 is the first section. And then the second section is from verse number 8 up to 32. And then the last section of this chapter is from verse 33 up to 51. So in summary or an overview, in the beginning of this 10th chapter, Sukadev Goswami is giving the 10 divisions of study in Bhagavatam. तो शुरुआत के लिए अध्याय के अंदर आपने सुना होगा कि सुखदेव गोस्वामी जो है तो भागवतम के अध्ययन करने के 10 विभागों का वर्णन कर रहे हैं। So he begin by saying Atra Sarva Vishakascha Stanam Poshanam Uttaya Manvantare Isha Anukata Nirodho Mukti Ashaya. तो जो शुरुआत के अंदर श्लोक आता है अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उदयः मन्वन्तर कृष्णः निरोध मुक्ति आश्रय।
He says that they are describing the 10 subjects of the Bhagavatam. तो ये जो श्लोक है इसके अंदर भागवतम के 10 विषयों का वर्णन है. There in the beginning, it explained about the first creation and secondary creation. तो जो पहला है वो है स्वर्ग, जिसमें सात्विक सृजन है, और दूसरा है विसर्ग, जो है गौण सृजन है. And then the planetary system, और उसके बाद ग्रहों की स्थिति, and the protection portion by the Supreme Lord to those who abide by His rule. और जो है बाद में पोषण, यानी कि भगवान द्वारा की रक्षा, जो उनके द्वारा किए गए नियमों का पालन करते हैं. And then impetus for activities. और उसके बाद प्रेरणा मुक्ति. And then explains about different mandalas. और उसके बाद अलग-अलग प्रकार के मनों का वर्णन है. The manus, how they rule different planets. एक प्रकार मनों है अलग-अलग ग्रहों के ऊपर राज्य करते हैं. And then we learn about the science of God. और उसके बाद भगवान का ज्ञान है. How to go back home, back to Godhead. इसी प्रकार से भगवान का Liberation. Mukti. And we learn about eventually Ashraya, the Supreme Personality of Godhead. So, in this section, which begins with text number 8 to text 33, Sukadeva Goswami is giving analysis regarding the Ashraya and Jivas. तो ये जो 8 से लेकर जो 32 नंबर के श्लोक है, इसके अंदर सत्य गोस्वामी जो है वो विश्लेषण करते हैं आश्रय और जीवन. Otherwise, or in other words, he is giving us understanding how the jivas are dependent, whereas the Supreme Personality of Godhead is independent. So in this section, he further gives the understanding about the Purusha avatars. How they are supremely independent. And then he does that by giving, and whereas the living entities are by nature independent. Sorry, dependent, yes. And then he gives understanding of Virat Rupa. So, this knowledge is very important. Because without understanding it, we may tend to think that we are the Purushas. Therefore, Krishna says in Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmana Sarvasvaha Ahankara Vimudatma Kataham Iti Manyate. इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति there are so many people who believe like that. There are many scholars who believe like that. That we are in control. I met one scholar from Gujarat in Kenya, one professor. I asked him, Professor, what do you believe?
He's from a faith called what? Jainism. वो जैन धर्म पालन करने वाला He is a Shah. और वो सरल था So he said, ours is philosophy. हमारी जो फिलोसफी है They believe in philosophy. He says their belief is philosophy. ओके वो लोग बोलते हैं हम फिलोसफी को विश्वास करते हैं Say there is no God who created. मगर भगवान नहीं है सच करता We just assume that there is God. हम खाली ऐसा मानते हैं कि भगवान है And then I asked him, I said, Professor, we see that the sun rises at the same time and it sets at the same time. We get winter, we get cold at the same time. We get rains at a particular time. It seems like there's someone who's doing good management here. How are the things going on harmoniously? तो मैंने उनको बताया कि देखो कृष्ण ये जो सूर्य जो है समय पर उगता है समय के अंदर नष्ट हो जाता है और बारिश होती है रहते और ठंडी गर्मी सब सीजन से होती है तो लग रहा है कि कुछ अच्छा व्यवस्था चल रहा है कोई तो कंट्रोल कर रहा है He said, because of our presence in this material creation, our presence influences things to go on the way they are going. तो उसे बताया कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं इसलिए हमारे भाव से ये सब चीज चल रहा है So this is what they believe. तो वो एक ऐसा जवाब है Therefore, Krishna says, Abhajananti Muda. तो इसको परम कृष्ण बोलते हैं और जानते हैं Abhajananti Muda. Yes, those who are foolish, they deny him. They don't understand him. जो मूर्ख है वो लोग भगवान को जानने के लिए उसको निकाल रहे हैं So we see so many scientists, they say this whole Jagat is just a combination of electrons or some force. तो ये जो भगवान वैज्ञानिक तो बता कि ये पूरा जगत जो है वो इलेक्ट्रॉन का है और फ्यूजन है उसके पैटर्न से बना हुआ है Or it came out of explosion, Big Bang theory. आपको बताते हैं कि ये जो जगत है विस्फोट से बना हुआ है जैसे कि So in that way, the Bhagavatam explains how this Jagat came by. और यहाँ भगवान बता रहा है कि how it is working, how the universe is working. So Krishna says, Maya Dakshana Prakriti Suyati Characharam. Etunayana Deya Jagat Viparivartati. No one has said that this Jagat is working under my direction. No one has said that. It's only Krishna who says it. Yes. But they are saying it's just working automatically. So in that way, Bhagavatam gave us the Ashraya, the Sharta, the Supreme Personality of God. So Prabhupada says here in the purport, thus the sense organs of the living entities are manifested by the will of the Lord. And each organ is controlled by a certain type of demigod. No one therefore can claim any proprietorship of the senses. The living entity is controlled by the senses. The senses are controlled by the demigods.
और इंद्रियों को देवता लोग अर्पण करते हैं and the demigods are the servants of the Supreme Lord. और जो देवता है वो भगवान के सेवक है So when Sri Krishna Bhagavan is by himself, that is called what is that? Swayam Rupa. जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है And then when he wants to create, it's called Tat Ekatma Rupa. और जब वो सृजन करना चाहते हैं तो ऊपर नाम है ये नाम And then he expands, the first expansion is Balaram. और पहला स्थान होता है नाम From Balaram you get Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. So from them you get Narayan, Mahavishnu, Kabadaksha Vishnu, Shirodaksha Vishnu. So these four, Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha, they are said to be in control of the four directions. So they are the assistants to the Supreme Personality of Godhead. It is said that the first one, Vasudeva, is responsible for consciousness. And then the second expansion, Shankarshan, is responsible for false ego. And then the third one, Pradyumna, is in control of the mind. No, intelligence. And then Aniruddha is the one who is in control of the mind. So everything is controlled by the Supreme Lord through his different expansions. But we cannot tell, we cannot see. And we think that we are in control. Yes, everyone thinks that is in control. But actually, we are controlled by different agencies of the Supreme Personality of Godhead. Just like in botany science, the science of plants, is what is called phototropic and gravitropic. Gravitropic means the plants grow in two ways, two directions. They grow upward towards the sun. That is phototropic. And gravitropic means they go deeper into the ground. So when you look at both parts of the plant, they are similar. The roots are similar to the fruits and the branches. So, but when the soil is not good, and then the plant cannot grow downward. If it can't go downward, it can't go upward. Both has to be there. So in a similar way, living entities
in order for them to grow upward, इसमें उसको ऊपर उठाना है, they need to understand ये उसको समझना है, this creation that they are in, इस प्रकार चलता है, so that they can maneuver ठीक है? their existence in this creation. They can live in harmony with this material nature. अगर उनको पता नहीं है कि सच्चाई कैसा है, तो यहाँ हम कैसे ले पाएंगे? When they are in tune with material nature, with this creation, अगर वो सच्चाई के साथ अपने आप को समाधान करते हैं, and then they will be in tune with Ashraya, the Supreme Personality. वो आदमी के आश्रय का पास जा सकते हैं। But when they are not properly in tune or connected with this creation, अगर वो सही तरह से सच्चाई के साथ कनेक्ट नहीं हुए, and they become totally lost. तो वो फिर उनका नाश हो जाएगा। And then after many, many, many years, और बहुत सालों के बाद they may come in contact फिर से वो सफर जाएंगे, with a devotee तो कैसे करना है? who is in connection with the Ashraya, the Supreme Personality of God. जिनका संबंध बाबा के साथ आश्रय के साथ, And by learning from that devotee, and then he may connect again. और इस प्रकार भक्तों के साथ सीखकर वो व्यक्ति वापस हमारे साथ आना शुरू करेगा। Therefore we say, Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Urmitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. I was born in darkness, तो हमसे बड़का बोलते हैं, तो इसे कहना है कि हम दिमाग में पैदा हुए हैं। and my spiritual master delivered me through the torchlight of knowledge. और इस प्रकार से मैंने गुरु ने मुझे समाधान प्रदान किया तो बोले गए। Therefore, we found that in Vedic system of education, इसलिए जो वैदिक पद्धति की शिक्षा है, it began with Shravanam, श्रवण करना, and then is Manana, उसके बाद वर्णन करना, and Nididhyasana, और उसके बाद प्रतिध्यास, Anushtana, अनुष्ठान, and Darshana. उसके बाद दर्शन। First, you hear attentively from the Guru, सबसे पहला क्या है, गुरु से ध्यान सुनना, and then you begin to inquire. और फिर इसके बारे में पूछना, And with inquiries come understanding. और इस प्रकार जिज्ञासा करने से ये समझ आएगी। And then after understanding, and then Anushtana means practice. We put that into our life. जब हम समझ जाएंगे तो जो चीज समझे तो हमारे जीवन में उतारेगा। And then if we do that, and then the fifth stage is darshana. उसके बाद जब इस प्रकार आएगी, आत्मा समाधान दर्शन करना है। Our vision becomes clear. हमारा जो दर्शन है, वो स्पष्ट हो जाएगा। We see just as we see in daytime when the sun is out. हम ऐसा देख पाएंगे जैसे सूर्य सुबह होता है, सब कुछ तो दिखता है एक साथ। But at night we cannot see. और जब अज्ञान का होगा तो नहीं पाएंगे। So night represents ignorance, इसलिए रात जो दिखाती है वो ज्ञान है, and the day represents knowledge. और सुबह जो है वो ज्ञान दर्शन है। That's why there is a verse says Krishna, Surya, Sama, Maya, Aya, Andhaka. इसलिए बाबा इसलिए बताते हैं कृष्ण जो है सबसे सभा है माया को अपना। That Krishna is like the sun, कृष्ण जो है सबसे सभा है, and Maya is like darkness. माया जो है विचार करना। So in a similar way, just as the plants go into darkness and the sun, उसी प्रकार जैसे वो पता है पौधा जो है अच्छे प्रकार से जाता है प्रकाश में जाता है। so some living entities, they only grow downward कुछ जीवों में नीचे जाए and they remain in darkness बहुत बार until maybe some devotee come जब तक कोई वक्त आता है and बचाए नहीं करता shed the light of knowledge. और उसको जब तक वो ज्ञान दे नहीं देता।
So this is what the Bhagavatam is doing here. ये भागवतम के अंदर इस प्रकार बताया गया है He is explaining how we are growing in our darkness. कि हम कैसे अंधकार में जा रहे हैं But somehow or other there is Ashraya और किसी तरह से अगर हमको आश्रय मिल जाना है that we are not aware of. इस प्रकार से हम सचेत हो गए So by the mercy of different agencies of the Lord, और इस प्रकार different agencies like the representatives, like demigods, और उनके जो भगवान के ऐसे उनके माध्यम से who are in control of our senses and intelligence and mind, वो हमारे पर्यावरण सब कुछ कंट्रोल करते हैं they may mercifully allow us to understand this supreme knowledge. और वो भी हमको इस प्रकार अवगत कराते हैं अलग करते हैं So therefore, the Srimad Bhagavatam, it deals mainly with the Ashraya, how to take shelter of the Supreme Personality of God. इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो आश्रय के ऊपर देता है यानी कि भगवान पर निर्भर है It's difficult वो चीजें बहुत डिफिकल्ट है because it deals only with renunciation. क्योंकि वो केवल त्याग के ऊपर निर्भर करता है Yes, not taking this corner. Like some people think, I'll do 1, 2, 3, 4, 5. When that is done, then I will surrender to Bhagavan. जैसे महाराज बताते हैं ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँगा हम बाद में क्षमा करूँगा But they end up caught up. तो ये सब तंग करता है Yes, sometimes we think, I'm young, I have time. समटाइम हम लोग सब लोग सोचते हैं कि अभी तो जवान But the time you realize you're an old man. In few years you become old man. In a short time we become old. तो हम हमारा समय तो छूटा है When we become old, जब हम बूढ़े हो जाएंगे we think, oh, now I'm old man. Maybe next life. तो हम सोचेंगे कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बना पक्के रहने को Yeah. Next life that never come. इस प्रकार दूसरा जन्म नहीं आए Just like at Puri, there was one man, one Brahmin. He was next door to Jagannath Mandir. ऐसे पूरे के अंदर एक ब्राह्मण है जो जाना की वाले लिखा है Every day he was delivering pani to the mandir for Jagannath, water. पानी सप्लाई वो जो है बाबा जगह से पानी सप्लाई करता है So the pujaris will ask him, why you don't take darshan? Why you just bring water? पुजारी बताया क्यों आप दर्शन नहीं करते क्यों पानी भरते हैं He used to say, Kal darshan karunga. Tomorrow I will take darshan. Jagannath is my neighbor. He is not going anywhere. जगह को बताया कल दर्शन के जाऊंगा काम करवा And Kal came as time, Kala. And he died without taking darshan. Yes. So, Kal darshan karunga. Tomorrow. But Kal, he comes in another form. It's time. So Bhagavatam says, take shelter, take mercy now, not tomorrow. Don't think I'm young now. When I'm old, I'll take darshan. Take darshan now, because we don't know about tomorrow. Yes. So that is the devotee who is serious. He doesn't wait for tomorrow. He wants to take darshan now. He wants to do sevana. Yes. So that's what Bhagavatam is teaching us. Yes, not Kal darshan karunga, not tomorrow darshan, now darshan now. Yes. Okay, thank you very much.
Let's see if you have questions. This Bhagavatam is very technical. और आपका धन्यवाद अगर प्रश्न है ये भागवतम है बहुत भक्ति की माला Yes, sometimes it's very mind blowing. कई बार हमारे मन को थोड़ा आकर्ष होता है Yeah, because you talk about now. ये भागवतम है Take darshan now, surrender now. Yeah, sometimes it's scary. I'm not ready. I want so many other things to do. Yeah. But Bhagavatam say now. Okay, thank you. If you don't have any questions, we can stop here. Okay. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki.